Welcome back. You're watching Healthy India, and today we are talking about coronary artery disease. And now you too can call us and find out if you have any doubts in your mind regarding this disease. But remember that please keep the volume of your hearers. And remember, the topic today is only coronary heart disease. And please note down the numbers, which are 1800115314 and 23035420. Do prefix 011 before that. Well, now coming to you, Dr. Gupta, is it true that smokers' risk of developing coronary heart disease is 2 to 4 times more than that of non-smokers? And so these people are obviously at a higher risk? Yeah, definitely. Smoking is one of the main culprit of coronary artery disease. Okay. And smoking any type, whether it's cigarette or BD or even tobacco chewing or gutka, any form of tobacco leads to coronary artery disease, cause artery spasm and diffuse disease of the heart. To salvage the patient. Sometimes it may not be salvageable with the stents. Okay. And in that case, he is cardiologist. And cardiologists perform certain sets of investigations, as you know, which starts with the ECG and echocardiography. And then it goes for a treadmill test and followed by angiography if it is needed. That if angiography shows something, then management starts. That's right. Usual course of event is either an intervention or a bypass surgery. We'll talk about this in detail, but before that, we have with us Mr. J.N. Rao from Tamil Nadu. Well, I think we've lost this connection for a while, so Mr. Rao can try once again, and the numbers I would like to repeat at this point, which are 1800115314 and 23035420. Please. It's narrowed more than 70%. So whenever the patient is doing exercise, whether it's physical or there is emotional upset, when heart requires more blood, it cries for help and it leads to chest pain. That's a stable angina patients. Okay. In this set of patients, we have a certain set of investigations, starting from basic tests to see other risk factors like cholesterol, blood pressure, diabetes, kidney functions, etc. They are done routinely in all patients to find out what are the risk factors. We take a detailed history. Then we do a ECG to see if there are any ECG changes or there is any secondary cause. पैनल आप मुझे एक्टोपिक हार्ट डिसीज है, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर डिसीज, और मैं 36 की हूँ. मैं जानना चाहूंगी कि फ्यूचर में क्या मुझे कॉर्नरी आर्टरी डिसीज की ज्यादा चांसेस हैं, और मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि ये मेरी डिसीज क्या प्रोग्रेसिव है. मैं इस समय मेटोप्रोलॉल ले रही हूँ, एक्सटेंडेड रिलीज 25. तो ये मुझे लाइफ लॉन्ग लेने के लिए कहा गया है. मेरे 2 क्वेश्चन है कि मुझे कॉर्नरी आर्टरी डिसीज की ज्यादा चांसेस हैं, और मेरी ये बीमारी क्या प्रोग्रेसिव है कि नहीं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन. यस सुमन जी, जैसे आपने बताया वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स हैं, ये हार्ट के एरिथमिया है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है. हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की बात करते हैं तो हम वेसल्स की बात करते हैं जिनमें ब्लड सप्लाई हो रही है और वॉल्व्स नॉर्मल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम यदि एज 40 से ज्यादा हो या 35 से ज्यादा हो तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एक्सक्लूड कर लेते हैं. जैसे जो हम डिस्कस कर रहे थे, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट है, यदि वो भी नॉर्मल है तो एक और टेस्ट होता है जिसमें 24 आवर्स रिलेटेड हो सकते हैं. जैसे हाइपरथायराइडिज्म हो तो हो सकता है, कभी कभी एंजाइटी से रिलेटेड हो सकते हैं, कभी कभी स्मोकिंग, एक्सेस टी, कॉफी से रिलेटेड हो सकते हैं, कभी कभी माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स या अन्य डिजीजेस से हो सकते हैं. बट बाई एंड लार्ज यदि हार्ट फंक्शन नॉर्मल है और कोई कॉरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है तो वेंट्रिकुलर एक्टोपिक से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. ये हो सकता है कुछ सिम्टम करें क्योंकि नेक्स्ट बीट उनको फील होती होगी कि ये बीट फील हो रही है. पर यदि आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, जैसे हार्ट अटैक हुआ है और फिर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स आ रहे हैं, तो वो फिर एक और इन्वेस्टिगेशन करने की, वो सीरियस भी हो सकते हैं. Right. इसलिए I think the फर्दर best would be इन्वेस्टिगेशन that for her to actually go to experts, and in case if you want a second opinion, you must take. एक बारी मैं 40s में अपने फ्रेंड का उसका बाईपास सर्जरी हुई थी तो मैं उसको लिए गया, तो मैंने वहाँ चेकअप कराया जी. तो वहाँ एंजियोग्राफी में उन्होंने कहा कि आपको एनोरिज्म ऑफ LCX है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम तो उसका खाली मेडिसिन से ही इसका कर सकते हैं. लेकिन उसकी वजह से मुझे क्या है, मैं बहुत ज्यादा जल्दी से चल भी नहीं पाता हूँ, चलता हूँ तो चेस्ट में पेन हो जाती है, फिर उसके लिए मुझे रुकना पड़ता है, चढ़ाई पे में चढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. मेरी लाइफ समझ नहीं आता कि इसका क्या एनोरिज्म ऑफ LCX का कोई ट्रीटमेंट नहीं है या मेडिसिन से या मुझे जिंदगी ऐसे ही एक्टिविटी करनी पड़ेगी. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन मिस्टर मोहन. आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब टू आंसर दिस प्लीज. क्या करना चाहिए उन्हें?
See, I'm not able to make out aneurysm of LV, he said, or LCX. And for that it needs itself a blood supply and nutrition, which is brought to the heart by two sets of coronary arteries. And these coronary arteries are the right and left coronary artery. The left coronary artery is further divided into a left anterior descending artery and left circumflex artery. So broadly speaking, we have the three major arteries which are supplying blood to the heart muscles. When there is an obstruction into these arteries, the blood supply to the heart muscle is not adequate. Right. So heart suffers from the ischemia, lack of blood supply, which leads to angina. In case there is total cutoff of blood supply, then heart muscle dies. And this we call as myocardial infarction or heart. Please lower the volume of your TV set and very quickly. Hello. Yes, what's your question? हाँ, मुझे तो डॉक्टर साहब से पूछना है, मैंने 3 साल जी हेलो हाँ मैंने एक्चुअली मेरे को चेस्ट में पेन रहता है अभी भी और 2 बार मैं एंजियोग्राफी करा चुका हूँ तो दोनों बार डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अगर टीएमटी बहुत ज्यादा करता हूँ या बहुत तेज चलता हूँ तो अभी भी मुझे to head into another short break, but do come back quickly as there's still something more on the other side. Chest pain directly shifted within an hour, angioplasty has to be done. If you think he goes to a hospital where primary angioplasty is not feasible, then you give clot busting drugs and later shift on to a tertiary care center for doing a primary angioplasty. So the delivery part is being taken care of. So there are rapidly approaches different. That's true, and it is a you can avoid it. Once it is occurred, it required some treatment, it required some management. Absolutely. What would be your concluding remarks? I would like to say that Dr. Bahal has already told about the efficacy of coronary angioplasty. I would like to say a word about coronary artery bypass surgery. Coronary artery bypass surgery today has become very safe. Long-term results are very good. Patient can easily expect to go for another 15 to 20 years without any problem. And if there is a problem after 15 to 20 years, he can again go for a bypass surgery. It can be done second time, third time, fourth time. So it's a kind of boon for the mankind, and you easily get, extra lease of life in terms of 20 to 25 years, and in which you can do your important work. True. Yes, so very quickly in 2 sentences if you can I always say that revise the definition of ABCD. A for remember, avoid smoking, tobacco in any form. B, blood pressure. It's a silent killer. So measure your blood pressure any occasion you go to the doctor. Even you go for a fever, have your blood pressure checked. C for cholesterol. Take care of your diet so that the cholesterol is under control. It's again a silent problem. So you do it for now, and I hope that we've all been able to learn quite a few things today. The first thing